In this video, we will discuss class 10th subject science, chapter number 1, that is chemical reactions and equations. And in this chapter, chemical reactions and equation, we will discuss step by step all these processes. Here, first of all, we will discuss what is chemical reaction. Number 2, chemical reaction involves. Number 3, chemical reactions happens in our daily life. Number 4, reactants and products. Number 5, chemical equations. Number 6, how to balance a chemical equation. So step by step we will discuss all these processes that to be happen in the chemical reactions and equations. So first of all, what is chemical reaction? It is a process in which one or more substances formed a new substance. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड. Physical method already discussed in the previous class, that is 9th class. And what are the physical methods? Magnetism, filtration, centrifugation, distillation, and the last one is the evaporation. तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड. कोई भी नया सब्सटेंस जो भी बना हुआ है, अगर हम नए सब्सटेंस को बने हुए हम दोबारा चाहे कि उसको हम एक या एक से अधिक सब्सटेंस में दोबारा कन्वर्ट करें बाय एनी फिजिकल मेथड, दैट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट स्टेप इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स नंबर 1, चेंज इन स्टेट. केमिकल रिएक्शन जो है इसमें स्टेट में चेंज कैसे आता है? चेंज इन स्टेट, दैट मींस सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, एंड गैस अगेन कन्वर्ट टू सॉलिड. That is the change in the state. Second chemical reaction involves that is change in the color. किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने से पहले या केमिकल रिएक्शन के होने के बाद किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज होना जो होता है वो चेंज इन कलर कहलाता है. नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का घटना जो है वो केमिकल रिएक्शन को इवॉल्व करता है. नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का एवोल्यूशन होना भी केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है. नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस हैपेंस इन आवर डेली लाइफ. केमिकल रिएक्शंस हैपेंस इन आवर डेली लाइफ. जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी दिन प्रतिदिन होने वाली क्रियाओं के बारे में, जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो भी हमारी चीजें होती हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो डेली लाइफ में इन्वॉल्व होता है. जैसे कि नंबर 1 पर है डाइजेशन ऑफ फूड. हमारा जो भी खाना है या जो हम खाने को खाते हैं, खाने को खाने के बाद उसका जो डाइजेस्ट होना है वो क्या कहलाता है? डाइजेशन ऑफ फूड. और वो एक तरह से क्या है? केमिकल रिएक्शन. भोजन का पाचन. नंबर 2 पर है रेस्पिरेशन, सांस लेना. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. नंबर 3, रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे पर जंग का लगना. दिस इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन. It is also a chemical reaction, rusting of iron. Number 4, formation of curd. दही का बनना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है.
That means formation of curd is also a chemical reaction. So chemical reaction involves various processes in our daily life, that is digestion of food, respiration, rusting of iron and formation of curd. And what are the examples of chemical reactions? First example is when magnesium ribbon be cleaned burning in air. That is performed in activity 1.1. जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन द एयर. Second example is when lead nitrate is mixed with potassium iodide. जब हम lead nitrate को mixed करते हैं potassium iodide के साथ, that is mentioned in activity 1.2. When we add zinc granules in sulfuric acid or hydrochloric acid, that is the activity in 1.3. So all these are the examples of the chemical reactions that is to be performed in activity 1.1, activity 1.2 and activity 1.3. Our next step is reactant. What do you mean by reactant? Who take part in the chemical reaction? जो chemical reaction में take part करता है, that is the reactant. Number 2, product. What do you mean by product? The substance which are formed in a chemical reaction. जो substance हमारा कहाँ पर बनता है? Chemical reaction में बनता है, that is known as product. And next is the example of the reactant and the products. That is when magnesium ribbon burned in air or oxygen give us magnesium oxide. जब हम magnesium ribbon को ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ जब हम जलाते हैं, that means that gives us the product of magnesium oxide. Next is chemical equations. Our next step is the chemical equations in the chemical reactions and equations. So what do you mean by chemical equations? A chemical reaction can be represented by a chemical equation. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा मेंशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स. किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? सिंबल्स का यूज किया जाता है ऑफ द सब्सटेंस, बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं, बोथ इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द प्रोडक्ट्स, with mentions of the physical state. And physical states we have already discussed in the previous lecture, that is magnetism, filtration, centrifugation, distillation and evaporation. The common example of the chemical equation is magnesium. When magnesium is burned with oxygen, that means it gives the result magnesium oxide. And एरो के हेड की तरफ को जो हम मेंशन करते हैं, that is the product, और एरो के टेल की तरफ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, that is the reactant. But अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है. जबकि अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो वहां मैग्नीशियम का भी एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है. दैट मींस वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन and this equation is known as the skeletal equation. Next आता है हमारा aqueous solution. It is the solution in which the solvent is water. ये एक इस तरह का solution है जिसमें कि जो solvent होता है that is the water. अब हम देखेंगे कि इस equation, chemical equation को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ये कैसे उसको फिजिकल स्टेट में लिखेंगे. हाउ द इक्वेशन इज रिटन इन द
फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो है वो ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है कि S रिप्रेजेंट सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस। So magnesium is in the form of solid, oxygen is in the form of gas, and when it forms magnesium oxide, it is also in the solid form. Next question is that how to balance the chemical equation. किसी भी chemical equation को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है? Here the common example is आयरन प्लस वाटर। आयरन प्लस वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दैट मींस दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। इन द रिएक्टेंट साइड आयरन हैज ओनली वन मॉलिक्यूल, whereas in the water hydrogen has two molecules and oxygen has one molecule. Whereas in the product side, iron has 3 molecules and oxygen has 4 molecules and hydrogen again 2 molecules. तो इसके लिए हम ऐसे जब हमने इनको बैलेंस करना है तो हम एक इस तरह एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमने एलिमेंट लिखा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। अब हम रिएक्टेंट में जाएंगे तो आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 1। और प्रोडक्ट में आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 3। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में? 2. How many molecules of hydrogen in the product? Again 2. That means this element is balanced because in the reactant hydrogen has 2 molecules and also in the product hydrogen has 2 molecules. That means this element is balanced. Next हमारा oxygen है। Oxygen has only 1 molecule in the reactant, whereas in the product oxygen has 4 molecules. तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि रिएक्टेंट के आयरन के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। वैसे हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने हैं। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि आयरन के भी रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल्स हो जाए। दैट मींस हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में? 1 मॉलिक्यूल, जबकि ऑक्सीजन के हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल। तो हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आयरन जो है कितने मॉलिक्यूल्स हो गए आयरन के? 3। हाइड्रोजन के कितने आ गए? अगर हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 करते हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है? 2 4 जा 8। तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो 8 हो जाए। तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, जिससे 2 4 जा 8। प्रोडक्ट में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 4 जा 8। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। अब इसको हम फिजिकल स्टेट में लिखेंगे। आयरन जो है दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म, फेरिक ऑक्साइड इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड हाइड्रोजन इज इन द gaseous form. Next common example is when magnesium is burned with oxygen, it gives the result of magnesium oxide. But in the reactant, magnesium has only 1 molecule, whereas in the product, magnesium again has 1 molecule. But in the reactant, oxygen has 2 molecules, whereas in the product, oxygen has only 1 molecule. That means this chemical equation is not balanced. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि 2Mg, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन 2। तो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। तो प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 हैं। अब हम इस इक्वेशन को फिजिकल स्टेट फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम इज इन द सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज इन द गैसियस फॉर्म and magnesium oxide against is in the solid form. That means we can say that this equation is the balanced chemical equation. Here we have to discuss about the how to balance the chemical equation, and step by step already we have to discuss
chemical reaction involves, chemical reaction happens in our daily life, reactants and products, chemical equations, and the last is how to balance the chemical equation. Thank you.